Guruji. Anantam Shukrana Guruji for this beautiful, blissful, divine satsang. Let's begin with the synopsis of last week. Last week we read chapter 59 of Rudrasamhita section 5. In this we read the story of how Lord Shiva slayed the two wicked demons Vidala and Utpala. In this we read that these two demons, Vidala and Utpala, had secured boon from Lord Brahma that they could not be slayed by any man. And therefore they became very wicked and haughty, and they entered into a battle with the gods, and they defeated the gods. The gods, once defeated, they approached Brahma and narrated their distress to Brahma. So Brahma consoled them and told them that these demons would be killed by Goddess Parvati. He also reminded them that they must remember Lord Shiva and Goddess Parvati respectfully. The overjoyed gods then went back to their abode. In the meantime, at Lord Shiva's behest, Narada went to the abode of these two demons and started narrating the glory of the beauty of Goddess Parvati. Now these two demons, they were deluded by deception of Lord Shiva, and they were afflicted by lust, and they both decided that they are going to abduct Parvati. So once when Lord Shiva was engaged in sport and Parvati was also playing, these demons who were in an aerial chariot spotted Parvati and decided that they are going to abduct her. So they descended from the sky and they took the guise of the Ganas of Lord Shiva, or the Shiva's attendants, and tried to approach Parvati. Now Lord Shiva already knew that these were the demons, and he shot a glance at Parvati, explaining it to her who they were. Parvati, of course, understood by the glance of Lord Shiva and immediately hit these two demons with a ball that she was playing with, and these demons whirled again and again and fell on the ground. They were completely destroyed, just like the peak of great mountains are destroyed by thunderbolts. Now this ball was called Kandukeshwara, which this ball turned into a phallic image of Lord Shiva called Kandukeshwara, which is at Kashi, and it is known for destroying the wicked. Now after killing the demons, the gods got to know about it, and they all came there and they eulogized Lord Shiva and Parvati greatly. And Lord Shiva granted several boons not only to the gods and goddesses there, but also to the people of Kashi. Till date, we have that Kandukeshwara image of Lord Shiva at Kashi, which not only destroys the wicked, it also yields salvation and worldly pleasure. With that, we come to the end of the compendium of Rudrasamhita. Now we are going to begin with the new compendium, which is SataRudrasamhita, and we're going to read one chapter, chapter 1, which is with the five incarnations of the Supreme Brahman. Today, Urvashi Aunty will be reading this chapter in English, and Rachna Aunty will be reading this chapter in Hindi. Jai Guruji. Jai Guruji, Anantam Shukrana for this seva. SataRudrasamhita chapter 1, the five incarnations of the Supreme Brahman. I bow to Lord Shiva of great bliss and of endless divine sports, who is great and omnipresent, who is the beloved consort of Parvati, who is the progenitor of Kartikeya and Ganesha, and who is the primordial lord of the universe. Shaunaka said, O Suta, O great fortunate disciple of Vyasa, O storehouse of wisdom and mercy, please narrate the incarnations of Lord Shiva, by means of which the Lord enhanced the welfare of the good. Suta said, O sage Shaunaka, with great devotion I shall narrate the incarnations of Shiva to you, O sage. Listen to it with attention and control over the senses. O sage, formally, Nandin, a form of Shiva and goal of the good, when asked by Sanat Kumara, told him the narrative with devotion to Shiva. Nandishvara said, the incarnations of the omnipresent Lord Shiva are countless in the different aeons, yet I shall narrate them as far as I know.
The 19th Kalpa is known as Shveta Lohita. The first incarnation is glorified as the incarnation of Satyajata. In that Kalpa, Shveta Lohita, endowed with a tuft, was born as the son of Brahma as he meditated upon the Supreme Brahman. On seeing that being in the form of Brahman and realizing that to be Ishvara, Brahma meditated on him in his heart and saluted him with palms joined in reverence. Knowing that Satyajata to be Shiva, Brahma, the Lord of the worlds, became delighted. With pure intelligence, he pondered over that great being again and again. As he thus meditated, sons white in color and famous for valor were born to him. They were of great wisdom and had the form of the Supreme Brahman. They were Sunanda, Nandana, Vishwananda, and Upanandana. They were the disciples of that noble soul. By them the Brahman was encircled. The delighted great Lord, the Satyajata incarnation of Shiva, lovingly bestowed on Brahma the perfect wisdom and the power of creation. The next Kalpa, the 20th one, is named and glorified as Rakta, red, wherein Brahma assumed a great splendor, red in hue. As Brahma, desirous of sons, meditated, a son appeared in front of him, wearing red garments and garlands. His eyes were red, and his ornaments too were red. On seeing that noble-souled son, he, resorting to meditation, knew him as the Vamadeva, incarnation of Shiva, and so bowed to him with palms joined in reverence. Your sons, wearing red garments, were born of him, namely Virajas, Vivaha, Vishoka, and Vishvabhavana. The delighted Parmeshvara, the Vamadeva, incarnation of Shiva, bestowed on Brahma lovingly the power of creation and perfect wisdom. The 21st Kalpa is said to be Pitavasis, wherein Brahma of great achievement became yellow-robed. As Brahma, desirous of sons, meditated, a son was born unto him mature, of great arms and great splendor, and wearing yellow garments. On seeing him engrossed in meditation and realizing that being as Shiva, the Creator bowed to him after performing the japa of Shiva Gayatri, who is the great goddess, bowed to by all the worlds. The great God was delighted with the mind in contemplation. Then from his sides sons of divine features issued forth. All of them had yellow garments, and they were the instigators of the yogic path. When that kalpa of yellow color of the self-born Lord elapsed, another kalpa set in, and it was named Shiva. After 1,000 divine years had elapsed, and the entire universe had become one vast ocean, Brahma, desirous of creating subjects, thought in sorrow. That Lord of great splendor saw a sun coming into view. He was black in color, possessed of great strength. He was shining in his own splendor. He was clad in black clothes and a black turban. He wore a black sacred thread. He had a black coronet, black toilet, and black unguent articles. On seeing that noble soul of terrible exploits, named Aghora, he worshipped him, the Lord of God, of wonderful black and tawny color. Brahma then contemplated on Aghora in the form of Brahman. He eulogized that unperishing being, favorably disposed towards his devotees by means of pleasing words. Then from his sides sprang up 4 noble-souled sons, all of whom were black in color and had black toilet and unguent articles. These brilliant beings in the form of Shiva had the clear names Krishna, Krishna Shikha, Krishnasya, Krishna Kanthadarak. The noble soul beings of this nature initiated the great and wonderful yoga called Ghora for the purpose of Brahma's creation.
O great sages, then another extremely wonderful kalpa of Brahma named Vishvarupa began to function. As Brahma, desirous of sons, meditated on Shiva mentally, Saraswati, goddess of speech, of great sound, manifested herself. She was Vishvarupa. Ishana, of such renowned features, supreme lord of crystal-like, pure brilliance, and bedecked in all ornaments, manifested himself. On seeing Ishana, the unborn lord, all-pervading, all-bestowing, the all-in-all of good forms, as well as formless, Brahma bowed to him. Lord Ishana, after instructing the path of the good to Brahma, created 4 auspicious sons in collaboration with his energy. There were born Jatin, Mundin, Shikhandin, and Ardhamunda. By means of yoga, they imparted good virtue and attained the goal of yoga. Thus, I have succinctly narrated the origin of Satyajata and others. O Sanat Kumara, O omniscient one, being desirous of the welfare of all the worlds. Then, O intelligent one, their dealings are beneficial to the 3 worlds and everything that is existent in the universe. The 5 famous forms of Mahesha are thus named: Ishana, Purusha, Aghora, Vama, and Brahman. Ishana form of Shiva is the first and the principal one. It directly occupies and presides over the individual soul, the enjoyer of Prakriti. Tatapurusha form of Shiva is the second. It occupies and presides over every object of enjoyment, the support of the attributes. The third form of Shiva is Aghora, that stands within, occupies and presides over the principle of intelligence with all its ramifications for the sake of dharma. The fourth form of Shiva is Vamadeva, who presides over the ego and is engaged in many incessant activities. The Ishana form of Shiva is the permanent lord of the organ of hearing, speech, and the all-pervading sky. Intelligent and wise persons call Tatapurusha as the lord of Twach, organ of touch perception, hand, sense of touch, and the wind element. Intelligent persons call the form Aghora the support of the physical body, the sense of taste, of color, and of fire as well. Vamadeva form of Shiva is remembered as the lord of the organ of taste, of the organ of excretion, of taste itself, and of waters as well. They know the form of Satyajata as the lord of the organ of smell itself, of the earth, and of the generative organ. These forms of Shiva, the source of all glory, shall be honored and bowed to strenuously by those who seek glory. He who reads and listens to the origin of Satyajata and others enjoys all desires and attains the ultimate goal. With this, I conclude chapter 1. Now I would like to call Rachna Aunty to read in Hindi. Thank you. Jai Guruji. Jai Guruji. Shukrana Guruji for this beautiful seva. अध्याय 1 जो परमानंद में है शतरुद्रसंहिता शिवजी के सजोयात वामदेव तत्पुरुष अघोर और ईशान नामक 5 अवतारों का वर्णन जो परमानंद में हैं जिनकी लीलाएं अनंत हैं जो ईश्वरों के भी ईश्वर सर्वव्यापक महान गौरी के प्रियतम तथा स्वामी कार्तिक और विघ्नराज गणेश को उत्पन्न करने वाले हैं उन आदिदेव शंकर की मैं वंदना करता हूँ। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप तो पुराणकर्ता व्यास जी के शिष्य तथा ज्ञान और दया के निधि हैं। अतः अब आप शंभु के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने सत्पुरुषों का कल्याण किया है। सूत जी बोले, शौनक जी, आप तो मननशील व्यक्ति हैं, अतः अब मैं आपसे शिव जी के उन अवतारों का वर्णन करता हूँ। आप अपनी इंद्रियों को वश में करके सद्भक्ति पूर्वक मन लगाकर श्रवण कीजिए। मुने पूर्व काल में सनत कुमार जी के नंदीश्वर से जो सत्पुरुषों की गति तथा शिव स्वरूप ही है यही प्रश्न किया था।
उस समय नंदीश्वर ने शिवजी का स्मरण करते हुए उन्हें यूँ उत्तर दिया था। नंदीश्वर ने कहा, मुने, यूँ तो सर्वव्यापी सर्वेश्वर शिव के कल्पांतरों में असंख्य अवतार हुए हैं, तथापि इस समय मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनमें से कुछ का वर्णन करता हूँ। 19वां कल्प, जो श्वेत लोहित नाम से विख्यात है, उसमें शिवजी का संयोजात नामक अवतार हुआ था। वह उनका प्रथम अवतार कहलाता है। उस कल्प के जब ब्रह्मा परब्रह्म का ध्यान कर रहे थे, उसी समय एक श्वेत और लोहित वर्णमाला शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ। उसे देखकर ब्रह्मा ने मन ही मन विचार किया। जब उन्हें यह ज्ञात हो गया कि यह पुरुष ब्रह्म रूपी परमेश्वर हैं, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उसकी वंदना की। फिर जब भुवनेश्वर ब्रह्मा को पता लग गया कि यह संयोजात कुमार शिव ही हैं, तब उन्हें महान हर्ष हुआ। वे अपनी सद्बुद्धि से बारंबार उस पर ब्रह्म का चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी ध्यान कर ही रहे थे कि वहाँ श्वेत वर्ण वाले 4 यशस्वी कुमार प्रकट हुए। वे परमोत्कृष्ट ज्ञान संपन्न तथा परब्रह्म के स्वरूप थे। उनके नाम थे सुनंद, नंदन, विश्वनंद और उपनंदन। ये सब के सब महात्मा थे और ब्रह्मा जी के शिष्य हुए। इनसे वह ब्रह्मलोक व्याप्त हो गया। तदनंतर सजोजात रूप से प्रकट हुए परमेश्वर शिव ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टिचर रचना की शक्ति प्रदान की। यह सजोजात नामक पहला अवतार हुआ। तदनंतर रक्त नाम से प्रसिद्ध 20वां कल्प आया। उस कल्प में ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण का शरीर धारण किया था। जिस समय ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनसे एक पुत्र प्रकट हुआ। उसके शरीर पर लाल रंग की माला और लाल ही वस्त्र शोभा पा रहे थे। उसके नेत्र भी लाल थे और वह आभूषण भी लाल रंग का ही धारण किए हुए था। उस महान आत्मबल से संपन्न कुमार को देखकर ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो गए। जब उन्हें ज्ञात हो गया कि ये वामदेव शिव हैं, तब उन्होंने हाथ जोड़कर उस कुमार को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनके विरजा, विवाह, विशोक और विश्वभावन नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सभी लाल वस्त्र धारण किए हुए थे। तब वामदेव रूपधारी परमेश्वर शंभु ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह वामदेव नामक दूसरा अवतार हुआ। इसके बाद 21वां कल्प आया, जो पीतवासा नाम से कहा जाता था। उस कल्प में महाभाग ब्रह्मा शीत वस्त्रधारी हुए। जब वे पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उस समय उन्हें एक महातेजस्वी कुमार उत्पन्न हुआ। उस प्रौढ़ कुमार की भुजाएं विशाल थी और उसके शरीर पर पीतांबर झलमला रहा था। उस ध्यान मग्न बालक को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि के बल से उसे तत्पुरुष शिव समझा। तब उन्होंने ध्यान युक्त हो चित्त से संपूर्ण लोकों द्वारा नमस्कृत महादेवी शंकरी गायत्री तत्पुरुषाय विहमे महादेवाय धीमहि का जप करके उन्हें नमस्कार किया। इससे महादेव जी प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात उनके पार्श्व भाग से पीत वस्त्रधारी दिव्य कुमार प्रकट हुए। वे सब के सब योग मार्ग के प्रवर्तक हुए। यह तत्पुरुष नामक तीसरा अवतार हुआ। तत्पश्चात स्वयंभू ब्रह्मा के उस शीतवर्ण नामक कल्य के बीच जाने पर पुनः दूसरा कल्य प्रवृत्त हुआ। उसका नाम शिव था। जब एकार्ण वर्ष की दशा में 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए, तब ब्रह्मा जी प्रजाओं को सृष्टि करने से इच्छा से दुखी हो विचार करने लगे। उस समय उन महातेजस्वी ब्रह्मा के समक्ष एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस महापराक्रमी बालक के शरीर का रंग काला था। वह अपने तेज से उद्दीप्त हो रहा था तथा काला वस्त्र, काली पगड़ी और काला यशोपवीत धारण किए हुए था। उसका मुकुट भी काला था और स्नान के पश्चात अनुलेपन चंदन भी काले रंग का ही था। उस भयंकर पराक्रमी महानस्वी देव देवेश्वर अलौकिक कृष्ण पिंगल मणि वाले अघोर को देखकर ब्रह्मा जी ने उसकी वंदना की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी उन भक्त वत्सल अविनाशी अघोर को ब्रह्म स्वरूप समझकर इष्ट वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। तब उनके पार्श्व भाग से कृष्ण वर्ण वाले तथा काले रंग का अनुलेपन धारण किए हुए 4 महामनस्वी कुमार उत्पन्न हुए।
वे सब के सब परम तेजस्वी, अवक्तनामा तथा शिव सरीखे रूप वाले थे। उनके नाम थे कृष्ण, कृष्णाशिक, कृष्णास्य और कृष्ण कंठ दृक्। इस प्रकार उत्पन्न होकर इन महात्माओं ने ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना के निमित्त महान अद्भुत घोर नामक योग का प्रचार किया। यह अघोर नामक चौथा अवतार हुआ। मुनीश्वरों, तदनंतर ब्रह्मा का दूसरा कल्प प्रारंभ हुआ। वह परम अद्भुत था और विश्व स्वरूप नाम से विख्यात था। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी की पुत्र की कामना से मन ही मन शिव जी का ध्यान कर रहे थे, उसी समय महान सिंहनाद करने वाली विश्वरूपा सरस्वती प्रकट हुई तथा उसी प्रकार परमेश्वर भगवान ईशान प्रादुर्भूत हुए, जिनका वर्ण शुद्ध स्फटिक समान उज्ज्वल था और जो समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन अजन्मा, सर्वव्यापी, सर्वांतर्यामी, सब कुछ प्रदान करने वाले, सर्व स्वरूप, सुंदर रूप वाले तथा अरूप ईशान को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। तब शक्ति सहित विभु ईशान ने भी ब्रह्मा को सन्मार्ग का उपदेश देकर 4 सुंदर बालकों की कल्पना की। उन उत्पन्न हुए शिशुओं का नाम था जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंड। वे योगानुसार सर्व धर्म का पालन करके योगिताओं को प्राप्त हो गए। यह ईशान नामक 5वां अवतार हुआ। सर्वज्ञ सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने जगत की हित कामना से संयोजात आदि अवतारों को प्राकट्य संक्षेप से वर्णन किया है। उनका वह सारा लोक हितकारी व्यवहार यथातथ स्वरूप से ब्रह्मांड में वर्तमान है। महेश्वर की ईशान, पुरुष, घोर, वामदेव और ब्रह्म, ये 5 मूर्तियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इनमें ईशान, जो शिव स्वरूप तथा सबसे बड़ा है, पहला कहा जाता है। वह साक्षात प्रकृति के भोक्ता क्षेत्रज में निवास करता है। शिव जी का दूसरा स्वरूप तत्पुरुष नाम से ख्यात है। वह गुणों के आश्रय रूप तथा भोगे सर्वयोग अधिशिष्ट है। पिनाकधारी शिव जी का जो अघोर नामक तीसरा स्वरूप है, वह धर्म के लिए अंगों सहित बुद्धि तत्व का विस्तार करके अंदर विराजमान रहता है। वामदेव नाम वाला शंकर का चौथा स्वरूप अहंकार का अधिष्ठान है। वह सदा अनेकों प्रकार का कार्य करता है। विचारशील बुद्धिमानों का कथन है कि शंकर का ईशान संज्ञक स्वरूप सदा कर्ण, वाणी और सर्वव्यापी आकाश का अधीश्वर है तथा महेश्वर का पुरुष नामक रूप त्वक, पाणी और सर्वगुण विशिष्ट वायु का स्वामी है। मनीषीगण अघोर नाम वाले रूप को शरीर, रस, रूप और अग्नि का अधिष्ठान बतलाते हैं। शंकर जी का वामदेव संज्ञक स्वरूप रसना, वायु, रस और जल का स्वामी कहा जाता है। प्राण, उपस्थ, गंध और पृथ्वी का ईश्वर शिव जी का संयुक्त नामक रूप बताया जाता है। कल्याणकामी मनुष्यों को शंकर जी के इन स्वरूपों की सदा प्रयत्न पूर्वक वंदना करनी चाहिए, क्योंकि ये श्रेय प्राप्ति में एकमात्र हेतु हैं। जो मनुष्य इन संयोजात आदि अवतारों के प्राकश्य को पढ़ता है अथवा सुनता है, वह जगत में समस्त काम्य भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त होता है। अध्याय 1 समाप्त। शुक्राना गुरुजी फॉर दिस सेवा। जय गुरु।